हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे किसी पर्टिकुलर OLQ को अगर बिल्ड करना चाहें तो हम कैसे करें। एक्चुअली स्पीकिंग एज अ स्टूडेंट आपका कंसर्न यही होना चाहिए कि इफ समथिंग इज मिसिंग, हाउ टू बिल्ड इट, knowing that this OLQ is there, knowing that this OLQ is there is okay. But if it is lacking in me, or if it is for some reason not that perfect in me as a person, how do I build it? And एक अच्छे mentor का भी काम यही होना चाहिए कि वो आपको ये समझाए कि दोस्त, build this OLQ, do this. This OLQ needs to be shined up a bit. So do this. अगर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप ये करें, आप वो करें, आप ऐसे करें, आप वैसे करें, तो खाली मेरे को ये थ्योरी समझाने का क्या फ़ायदा है कि आपका ये जो है इफेक्टिव इंटेलिजेंस ये होता है, चाहे रीजनिंग एबिलिटी ये होती है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ये होती है। ये तो एक नॉलेज के लिए आपके हो गया कि चलो ठीक है, ऐसी भी कुछ टर्म्स हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप फौज में सिलेक्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, ऑफिसर बनने के लिए नहीं जा रहे हैं, SSB के लिए नहीं जा रहे हैं, आपको इन टर्म्स से शायद जीवन में कभी लेना देना ही ना हो। यू मे नॉट एवर नीड दीज टर्म्स। सो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू बिल्ड योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। बहुत अच्छा है, आप सोचिए, अपने आप से कोरिलेट कीजिए, मुझे बताइएगा could it correlate to you or not, because my idea of teaching is it should relate to you. मेरी क्लासेस जब होती हैं, जो मैं ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, sometimes when I'm talking about OLQs particularly, there is a pin drop silence. और जब वो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि दिल तक बात पहुँच गई है। उसके पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है अनंत फ्रॉम साउथ, and he was recommended for Coast Guard, but then he was struggling for his medicals and finally he got cleared in his medicals. I am very happy for him because sheer story of great determination and destiny. His father was not there when he was a very young man, or child probably, but the way he has shaped himself, the way destiny has helped him to achieve his dream, I am really happy for him. So on this happy note, I today will talk about how to build your effective intelligence. Practical sense है आपका, pure practical sense. आप अगर अपने स्क्रिप्चर्स में भी जाएंगे, आप रामायण को पढ़ेंगे, आप महाभारत में पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल एसेंस आपको मिल जाएंगे जो वो लोग एम्प्लॉय करते थे एट दैट टाइम, विद द आइडिया टू हाईलाइट कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ही आपको पर्टिकुलर सिचुएशंस में, खासकर वॉर रोल्स में हेल्प करता है। बेसिक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। जब माता सीता को रावण ने उठा लिया, हरण किया उनका, while she was being taken to Sri Lanka, she kept dropping her ornaments. Now what is it? What exactly is this? This is sheer presence of mind, because she knew कि उसको ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण तो आएंगे। अब वो आएंगे, so if they will find my ornaments on their ways, they will be sure, though they know where I am, they definitely know कि which direction I am, and by then they would also know कि probably who has taken her, but still she kept dropping them, and actually it was found not exactly by her. Finally अगर आप देखेंगे तो भगवान हनुमान को उनमें से एक ऑर्नामेंट मिला, और जब श्री राम आए वहाँ पे किष्किंधा में, तो उन्होंने वो ऑर्नामेंट दिखाया और भगवान राम तभी पहचान गए, एंड देन ही वाज वेरी श्योर कि शी हैज गॉन थ्रू दिस वे। सो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ रोल दैट यू आर गोइंग टू assign yourself in armed forces, because practical intelligence will help you not only overcome various situations, particularly warlike situations, but in even day-to-day operations. How practically do you think?
If you don't think practically, nowadays in corporate world also, the people who are thinking practically, the people who are pragmatically working on solutions to a problem, they are more required. So what is practical intelligence or what is practical thinking? Practical thinking का सबसे important element है, my dear friends, that you are first of all looking at solution. You are never looking at the problem. If you keep looking at the problem, one thing is for sure, 110% sure, that you are not going to find the solution. You will be able to find the solution only if your mind is working towards finding a solution. आप डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल्स ले लो. आप कहीं पे मान लो स्टक हो गए हो, आप लाइफ में स्टक हो गए हो फॉर सम रीजंस, योर करियर इज नॉट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, और द कोर्स दैट यू आर पर्टिकुलरली enrolled in, suppose you are enrolled in a civil engineering course, it cannot take you anywhere if you don't enhance it or add more skill to it. That is your situation. Now one way is you keep looking back, oh why I did it, why should I do this. Second is that you think how you can enhance it, or you think of the alternates. Civil engineering gives you a degree, you are eligible to appear for GATE examination, you are eligible to appear for Indian Engineering Services examination, you are definitely eligible to appear for Defense Services examination. So you focus and align yourself towards these targets, and in a very structured manner. That is practical intelligence. Not having practical intelligence is यार अब तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब छोड़ दे. So you're not at all ready to look at the solutions and options. You're only ready to look at the problem and then talk about it and then let the time while away. आप GTO टास्किंग में ले लीजिए. आप अगर मान लीजिए PGT कर रहे हैं, आप चढ़े हुए हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप खड़े हैं और आपको अब सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको समझे नहीं आ रहा है कि मैं अब आगे चाहूं कैसे. One of the major reasons can be that you are not at all looking at the solution. आप सोल्यूशन की ओर ना देख रहे हैं, ना आपकी देखने की इच्छा है, आप प्रॉब्लम में स्टक हैं. Getting stuck in the problem will never give you the solution. So one of the basic rule for building your practical intelligence is कि accept, okay I'm stuck, that is one, accept, हो गया यार. Second is look at the solution. There is always a solution. I am writing this line, you can also write it somewhere in the place where you study or your board or whatever. There is always a solution. It can never happen that there is no solution. There are certain cases in life when you feel that there is no solution, but they are very extreme cases, particularly the matters of life and death. Still, in those cases also, I have seen people staying optimistic. But when it comes to finding your career, alternate options, solutions, PGTs, there is always a solution. I am telling you, just remember these words. Now, why you are not able to find the solution is simply because you are not looking at the solution. You are just looking at the problem. Your perspective has to change. So let's move ahead. Let's take another example. So practical intelligence, first part is look at the solution. Second part is, one of the major reasons why you're not able to find the solution, though it is always available, is you're not involved. When I say you're not involved, means your mind is not there. You are physically there, whether it is about PGT or whether it is about group planning or whether it is about group discussion or whether it is about the interview. Though your mind, physically you are there, your mind is somewhere else. Your mind is thinking something else. It may be anything else. It may be, your mind is thinking, why is he doing this? Why is he doing this? What is GTO doing? What is Falana doing? Why is interviewer looking at me like this? What does he mean? That's why ना इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के कैबिन को इतना सोबर रखने को बोला जाता है कि आप प्लीज़ अपने कैबिन में कोई डिस्ट्रैक्शन रखें ही मत.
50 तरह के पोस्टर न लगा दें. आई एम सीरियस. दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर केविन शुड बी लीस्ट डिस्ट्रैक्शंस. No posters, not even a wall clock. Wall clock is also kept behind so that the person is not looking at the time. आप देखिए DIPR कितना ध्यान से सोचता है इन चीज़ों के बारे में कि आप, बट आपका मन जो है वो चंचल है, वो स्थिर नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है, वो वहाँ है ही नहीं. आप खुद से कोरिलेट करके देखिएगा. आप घर पे हैं बट घर पे नहीं हैं. आप दोस्तों के साथ हैं बट आप कहीं और हैं. ऐसा आशिकी में बहुत होता है. Once you're in love with someone, you're there but you're not there. You're only thinking about that person. But in case you are doing this, I will advise, please wait for some more time. Build your career first and then do all this. But here I am talking about the practical aspects. You were there but you're not there. Since you're there physically, your mind is not there, your mind is not applying itself. If it is not applying itself, where is the solution? There's no solution there. You will not find the solution. And then you will believe, your mind will be trained to believe that there is no solution. But as I have been telling, there is always a solution. Third and most important thing of all this will be your self-belief plays a very key role in your practical intelligence. In building your practical intelligence, while we are doing the definition, I told you that effective intelligence is about finding your solution when in tight corner. Finding a solution in a tight corner is directly linked to the kind of belief and faith you have in yourself. You may say why and how, it is a debatable topic, but I am telling you, your confidence builds from belief, your belief builds from your faith. Both are interlinked. All three are interlinked to each other. If you are the kind of person who says ki no, I will find a solution, and no, there is always a solution, and no, it is always there. The belief system, if it is strong, that's why when I take my classes, my initial emphasis is on building these two things, belief and faith system. Because if you yourself are not believing ki I'll become an officer, I am telling you, no one else is interested in believing. You are the brand ambassador. You don't want to advertise yourself. You don't want to believe yourself. You just want to, believe कि नहीं सब ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता है. आप अगर गिव अप टेंडेंसी में बैठे हुए तो कुछ नहीं हो सकता. तो सिंपल सी बात है, आपका अपना ओन बिलीफ सिस्टम इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपको भले ही परिस्थितियां विकट हैं, आप निकाल लें रास्ता. मैं एक लड़की के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ओमकार. वो देख रहा होगा वीडियो. ये कितना सॉलिड बंदा है, मेरे को इतना अच्छा लगता है वो बंदा. मतलब खेती की उस बंदे ने. While after doing civil engineering, he was working as a farmer, taking care of his family. His mother had expired. So his elder brother and his father, he used to manage the home. He used to do the kheti, typical kheti from Maharashtra he is. But he had such a strong belief system, such a strong faith. He knew he is meant for that. वो बिलीफ सिस्टम आपका भी स्ट्रांग होना चाहिए. मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप वहां रहें जहां आप हैं. आप अपने फैमिली में हैं बट बातें कुछ और सोच रहे हैं, ध्यान कहीं और है, मोबाइल टनाटन चल रहा है, आपका हाथ मैसेजेस में लगा हुआ है, आपका माइंड कहीं और है. आप बता रहे हैं आप कहाँ से सोल्यूशन ढूंढेंगे, आप कहाँ से इन चीज़ों को ग्रैस्प करेंगे. You will not be able to grasp anything. क्या बातें हो रही हैं, मम्मी क्या बोल रही हैं, पापा क्या बोल रहे हैं, उनसे कनेक्शन आपका मिस हो जाएगा. वो कनेक्शन जो मिस होगा वो आपकी स्टोरीज में और आपकी इंटरव्यूज में रिफ्लेक्ट करेगा. फ्रेंड्स में है बट कहीं और है, वो फ्रेंड्स की कनेक्शन वाले में मिस हो जाएगा. आपका वहाँ होना जरूरी है जहाँ आप हैं. यही है आर्ट ऑफ लिविंग, और कुछ नहीं है. That is all art of living is all about.
If you are able to put yourself where you are living the life king size. If you are able to enjoy the process and not only the success, you are living life king size. You are living in the moment. So live in the moment. बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा, बहुत ज़रूरी हैं। आखिरकार पर्सनालिटी को बिल्डअप करना है, चीज़ें रटनी नहीं है। रट के कुछ नहीं मिलने वाला मेरे दोस्तों। सो सी यू, एंड बताना मुझे वीडियो कैसे लगा, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना, और भी कई बातें करेंगे इस पर। बहुत अलग अलग तरह के कंटेंट मैं सोचता रहता हूँ, बनाऊँगा। और बट रेडीमेड सोल्यूशन कुछ नहीं, व्यक्तित्व का निर्माण। यू हैव टू फाइंड योर वे। थैंक यू, जय हिंद।